हेलो नमस्कार भाइयों बहनों, cactiwithiva में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने जो लेकर के आए हैं वो हमारा प्लांट है हावर्थिया लिम्फोफिलिया। दिस इज़ द वेरीगेटेड वैरायटी ऑफ हावर्थिया। ये देखिए, आज के हम अपने वीडियो में आपको इसके बारे में बताएंगे। और देखिए कितना खूबसूरत प्लांट है। ये इसकी वेरीगेशन इसमें है, ये जो इसमें येलो स्पॉट आए हुए हैं। देखिए ये इसमें एक बेबी प्लांट भी दिख रहा है आपको। ये देखिए एक रेयर प्लांट है। रेयर प्लांट वही होते हैं जिनके बेबी प्लांट कम होते हैं। ओके और देखिए ये येलो कलर का है, येलो स्पॉटेड है। और इसमें कोई कोई प्लांट ऐसे भी आए हैं जिसमें पूरा येलो प्लांट हमारा आया है। जो बेबी प्लांट है वो पूरा येलो कलर का है। तो इसका दो तरीके के प्लांट आते हैं, एक ग्रीन होता है और एक येलो स्पॉटेड होता है। जो ग्रीन होता है वो कॉमन होता है और जो येलो स्पॉटेड होता है वो वेरीगेटेड होता है। तो इसमें जो आपको धारियाँ दिख रही हैं ये येलो स्पॉटेड है। सो दिस इज़ वेरीगेटेड प्लांट। तो इसको आप पार्शली शेड में रखिए और इसको डेकोरेशन के लिए यूज़ करिए। आप लोग प्लास्टिक के प्लांट यूज़ करते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छे भी नहीं है। उससे कोई भी सिर्फ आप एज ए डेकोरेशन पीस यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसी को यूज़ करिए। आप लाइव प्लांट यूज़ करिए। आप लाइव प्लांट को अपने डाइनिंग टेबल, ऑफिस एरिया, जहाँ पर भी पार्शली सनलाइट आती है, विंडो के पास आप रखिए, डेकोरेट कीजिए। और इनको तो बहुत थोड़ी सी जगह की ज़रूरत होती है, उसमें आप लगा के रखिए और ये वहाँ के उस कॉर्नर की खूबसूरती इतनी ज़्यादा बढ़ा देंगे कि आपको कोई और डेकोर पीस रखने की ज़रूरत भी नहीं होगी। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। Hello guys, friends and all my nature lovers, this is Ivanka and welcome back to my channel. And today's topic of discussion is Haworthia's limifolia. This is also a type of Haworthia variety which is found in southern Africa. And it was first described in 1910 as a plant. And Haworthia need to be watered when their soil is completely dried out. Means do not water it wholly. Means if you put more water then it will get rotten and then everything will be a chaos for you. So only water when it is completely dry. Means you just put your finger in this like this, and if some sort of moisture you can feel, then only water, else don't water. Because if you see the surface of the plant you will feel like, oh it is dried, it needs water. It's certainly like that. You just put your finger and if you feel the moisture in 1 or 10 inches only, then only water, else you don't water this. Because and about 2 to 3 weeks you water, as depending on to the moisture of your area or region. If there is more moisture, means less water is required. If there is less moisture, then more water is required. In winter they need less water, so you can basically forget about them and just water every other month. Haworthias love bright light, indirect sun. Means they love indirect sunlight. Means they need a little bit sunny day. 4 to 5 hours of sunlight is sufficient for them to conduct their photosynthesis. Although some Haworthia species can found in full bright sun, many may live in more protected spots, therefore are adapted to thrive in partial shade. This makes Haworthia well adapt to lower conditions found in the house. Means it can adapt direct sunlight also and indirect sunlight also, but please make it comfortable. It can adapt any sort. Just take care of it, love it, and it will love you. And yeah, it is variegated. You can see most of Haworthias are green in color, but it is variegated one. Means yellow is there, yellow linings you can see. And yeah, this is our purest deer plant. So I hope you will like my video, like my plants, like my collection. If you do, please give it a big thumbs up, subscribe to my channel. Thanks for watching. Bye bye.